हम्म तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया, वो डिस्कस किया हमने इंट्रोडक्शन, राइट, वेरियस मेथड्स इन साइकोलॉजी टू अ सर्टेन नॉलेज, साइंटिफिक मेथड, इट्स फीचर क्या होते हैं, प्रॉब्लम इन मेजरमेंट कल हमने डिस्कस किया, इन बिहेवियरल साइंसेस, एंड अदर थिंग दैट वी हैव डिस्कस इज लेवल ऑफ मेजरमेंट of psychological variables, that is nominal, ordinal, and interval. So, and ratio also. So that we have discussed till now. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे टेस्ट कंस्ट्रक्शन, कि हाउ वी कंस्ट्रक्ट टेस्ट। जो अगर हम बात करें टेस्ट का, हमें पता है कि जिस तरीके से हम लोग टेस्ट यूज करते हैं, जो टेस्ट चाहे वो कोई भी टेस्ट है, मतलब साइकेट्रिक टेस्ट, सो वो टेस्ट क्या और उनको कैसे कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है, और उसके अंदर आइटम एनालिसिस, कॉन्सेप्ट, मेथड्स ऑफ एस्टेब्लिशिंग रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड नॉर्म्स। सो ये हमारा इस यूनिट के अंदर रह गया है। सो वो आज कोशिश करेंगे जितना हो जाए वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास से अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का जो लास्ट में टॉपिक किए हैं, तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं स्टार्ट करूँ। तो टेस्ट कंस्ट्रक्शन होता क्या है? तो सबसे पहली चीज, चलिए मैंने सीधे ये निकाल लिया है, तो अभी मैं आपको पहले टेस्ट के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, एंड देन हम लोग आइटम एनालिसिस पे आएंगे। आइटम राइटिंग है। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होते हैं, कोई बताएगा मुझे? पुनीत, कुमार गौरव, श्रीजित, अमित, कुछ बताना चाहते हैं आप? साइकोलॉजिकल टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है, कोई बताएगा? बोलिए, आइडिया है किसी को? साइकोलॉजिकल टेस्टिंग क्या होती है? अगर हम आपसे ये पूछें कि व्हाट इज साइकोलॉजिकल टेस्ट, तो क्या पता है आपको, बताएं। नहीं, ओके। सो हेलो, हाँ हाँ बोलिए। So basically, it is a kind of measurement we can say by any psychological test. We can measure the behavior, measure we can say multiple types of disorders also. So that kind of test we can say psychological test. ओके, राइट, बहुत। तो यूजुअली वी मेजर बिहेवियर और सम कंस्ट्रक्ट, है ना? सपोज एटीट्यूड एक कंस्ट्रक्ट है, पर्सनालिटी है, इंटेलिजेंस है। सो दीज आर द कंस्ट्रक्ट वी मेजर थ्रू आवर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आता है कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग हम टेस्ट क्रिएट कैसे होते हैं। कुछ एक चीजें रिलायबिलिटी, वैलिडिटी वगैरह हमने बात की थी, है ना, कल की क्लास में भी, कि किस तरीके से वो जरूरी है किसी भी टेस्ट के लिए। तो अब आप ये जान सकते हैं, जैसे मैंने कल आपको बोला कि मेजरमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ एनी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, है ना? मेजरमेंट, इफ यू कैन नॉट मेजर यू कैन नॉट स्टडी। ऑलरेडी ये बात हमने की, ठीक है? तो एवरीथिंग वी डू बिगिंस विद द मेजरमेंट ऑफ whatever it is we want to study. Suppose being a clinical psychologist, you get a patient of depression or schizophrenia or OCD or other disorder. So first thing what you will do, you will objectively measure that symptom. And measurement, why measurement is important? Because so that you can get, you will know कि
क्या प्रॉब्लम है और कितना प्रॉब्लम, और अगर आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं या कोई भी इंटरवेंशन जिसको हम बोलते हैं और उसके बाद फिर असेसमेंट करते हैं, तो आपको ये पता लगता है कि जो जिस कंडीशन में क्लाइंट आपके पास आया था क्या उसी कंडीशन में है या उसमें कुछ बेहतर हुआ है या कुछ खराब हुआ है। तो टू इवेलुएट आल्सो वी डू मेजरमेंट। तो मेजरमेंट इज द असाइनमेंट ऑफ नंबर्स टू ऑब्जेक्ट, जो कल हमने आपसे डिस्कस किया। डिफरेंट जो पर्सनालिटी क्वेश्चनर्स होते हैं वहां पे हम उनको क्वांटिफाई करते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए थे, जैसे 16 PF, MMPI, यहाँ पे आइजन पर्सनालिटी क्वेश्चनर लिखा हुआ है। सो दोज आर द लाइक मेजरिंग टूल, राइट। और इसके अलावा हमने बात किया था कि कितने तरह के मेजरमेंट होते हैं हम कर सकते हैं, है ना, द लेवल्स ऑफ मेजरमेंट। तो स्केल्स जिनको हम बोल रहे थे कि डिफरेंट स्केल्स क्या, तो नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो, ये हमने कल डिस्कस किया। तो अब ये इसके आगे हम चलते हैं कि ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ। ये मैं इसलिए आगे बढ़ा रहा हूँ, ये हम सारा डिस्कस कर चुके हैं कल, क्योंकि ये पीपीटी में ऑलरेडी मेरे पास इस पीपीटी में भी है, सो इसलिए इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। तो अब आते हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग क्या होती है, व्हाट इज साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। तो सिमिलरली लाइक यू ऑब्जर्व पीपल, आप कहते हो ना आपके साथ जितने लोग हैं जिनको आप ऑब्जर्व करते हो, देखते हो, तो आप बोलते हो ना कि ये ऐसा पर्सन है, ये अच्छा नहीं है, ये तो बहुत ही नेगेटिव पर्सन है, इससे दूर रहना चाहिए, दैट काइंड ऑफ थिंग लाइक वी यूजुअली से, राइट। तो क्या होता है कि आप देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके बेस पे आप रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो गड़बड़ भी हो सकता है क्योंकि आप बायस्ड भी हो सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है, जिस आदमी को आप पसंद नहीं करते उसकी सारी चीजें आपको खराब लगती हैं, और जिसको आप पसंद करते हो उसकी खराब चीजें भी आपको अच्छी लगती हैं। तो दिस इज ए बायस, दिस इज काइंड ऑफ बायस। सो अब आपका क्लाइंट के साथ में तो चलेगा नहीं, या जो जिसके साथ पर आप साइकोलॉजिकल असेसमेंट कर रहे हो तो चलेगा नहीं। तो इस वजह से उन्हीं जो बिहेवियर्स के बेस पे, भाई आप किसी को अगर बोलते हो कि आदमी अच्छा नहीं है तो उसके किसी बिहेवियर के बेस पे ही तो बोलते हो। हाँ, सब्जेक्टिविटी भी इन्वॉल्व होती है कि आप पसंद करते हैं उसको या नहीं पसंद करते, जिसको पसंद करते हैं तो उसकी 100 गलतियां माफ, जिसको हम बोलते हैं, तो ये भी होता है। तो इन सारे बायस से बचने के लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड तरीका बनाया गया जिसको हम साइकोलॉजिकल टेस्ट बोलते हैं, टू असेस द बिहेवियर ऑफ द पर्सन, या साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट जो है उसको हम असेस करने के लिए टूल्स बनाते हैं, सो दैट विदाउट बीइंग बायस्ड, ऑब्जेक्टिवली, विदाउट इन्वॉल्विंग सब्जेक्टिविटी, हम इसको असेस कर पाए। जो भी चीज हम असेस करना चाहते हैं, चाहे वो आईक्यू है, एटीट्यूड है, पर्सनालिटी है और डिप्रेशन है, वॉट एवर इट इज, सो दैट इज हाउ इट स्टार्टेड। और पहली चीज जो असेस करना शुरू की गई दैट वाज इंटेलिजेंस। सो उसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं, फिर टेस्ट में आएंगे। तो और इस फील्ड को हम साइकोमेट्रिक्स भी बोलते हैं, है ना, या साइकोलॉजिकल टेस्टिंग या साइकोमेट्रिक टेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। तो अब साइकोमेट्रिक्स है क्या, द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट डील्स विद द डिजाइन, एडमिनिस्ट्रेशन, interpretation of quantitative test for the measurement of psychological variables such as intelligence, aptitude and personality. तो साइकोमेट्रिक्स क्या है, साइकोमेट्रिकल टेस्ट क्या है, कि इज ए ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी जो टेस्ट को डेवलप करते हैं, कैसे उनको इंटरप्रेट करना है, हाउ वी हैव टू डिजाइन देम एंड व्हाट आर द डिफरेंट like areas that can be measured. So ये इन सारी चीजों के साथ में काम करते हैं अगर हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की बात करें। As I told you yesterday also, it is an entirely different thing. Suppose you want to do, you can do in your final year, you can do
one thing, like you can develop a test also. If you have enough sample, if you have time, so you can develop a test also, and you can publish that test with your name. तो टेस्ट ऐसे ही बनाए जाते हैं कि उसका उसको स्टैंडर्डाइज करना, आइटम सेलेक्ट करना, कौन सा किस एरिया को आप मेजर करना चाहते हैं, ऑल दोस थिंग्स. सो ये जो सारी चीजें डील करता है वो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में सारा आता है कि टेस्ट कैसे बनते हैं. एक तो हो गया एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग जो हम लोग क्लिनिकल पॉपुलेशन के साथ में करते हैं. ये हो गया आपका कैसे टेस्ट डेवलप करते हैं जब हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग. तो व्हाट इज psychometric test? It is a standardized procedure for sampling behavior and describing it using scores or categories. So हम क्या करें कि जो हमारे अगर आपने टेस्ट देखे हैं जो है आपके जैसे MMPI है या 16PF है, अब उसमें कोई क्वेश्चन हो सकता है कि how you feel most of the time. That is your behavior. We try to, from those sentences, we try to find out your behavior. So there is certain behavior that we want to study, and that sentences are given in the personality test. You ask those questions to your client, or client read it, and accordingly they respond to the questionnaires, and then we quantify it, and then we try to find out what kind of personality the person is having based on the scores that we have scored, right? So this is the psychometric test. So standardized होना चाहिए क्या चीज, प्रोसीजर. As I said कि मैनुअल में दिया होता है आपका कि कैसे करना है, कितने टाइम में करना है, all those things. And then what we are doing, we are sampling the behavior. We are taking certain behavior that we are studying in that test only. एंड इस कोर्स और कैटेगरीज में फिर डिवाइड करते हैं कि माइल्ड लेवल का डिप्रेशन है, इसको मॉडरेट लेवल का है, या जो भी चीज हम असेस कर रहे हैं, ऑल दोस थिंग्स वी डू. सो अब तो ये इसको हम बोलते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट. नॉर्म्स, स्टैंडर्डाइजेशन. अब स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर क्या होता है? स्टैंडर्डाइजेशन हम करते हैं जिसमें आपका रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, नॉर्म्स डेवलप करना आता है, इसको हम स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं टेस्ट का. ठीक है, अब ब्रीफ हिस्ट्री हम इसकी देख लेते हैं. एंड टेस्टिंग फॉर द प्रोफिशिएंसी dates back to 2200 BC when the Chinese emperor used grueling tests to assess fitness for office. So ऐसा नहीं कि आज से कर रहे हैं, बहुत 2200 BC बिफोर प्राइस आप सुन सकते हैं. आज से कितना, करीब 4000 साल पहले जो रिटन हिस्ट्री है वो भी है कि there was some kind of assessment in China to take those employees, right? तो अब ये जो साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो इट स्टार्टेड विद फ्रांसिस गाल्टन, जिन्होंने 1822 और 1911 के बीच में उनका टाइम पीरियड था. तो अब एंड ही वाज ए cousin of Charles Darwin, right? So interested in individual differences and their distribution. So he tried to find out कि भाई लोग किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. Individual differences means IQ सबके पास है, the quality may differ from one to other. So everyone has unique qualities. So how these unique qualities we call individual differences because they are specific to individuals. So he wanted to know how they are different from each other. And he tested 17,000 individuals on height, weight, size, accessible body parts, behavior, hand strength, visual acuity, and reaction times. So different height, weight, ये सारा कुछ उन्होंने measure किया. That was the initial first thing he did. Demonstrated that objective tests could provide meaningful scores. और इसके बेस में उन्होंने बताया कि जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट हैं वो मीनिंगफुल टेस्ट हमें दे सकते हैं. इसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं. I am just telling you, you can read it in every book you will get when you will read about intelligence testing or psychological testing. So you will get these names. Then James Catter, इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी टेस्ट में कंट्रीब्यूशन क्या किया? कैटल का आपने सुना भी होगा टेस्ट. His tests were in the Bross instruments
tradition of Galton, mostly motor and equity test. ये motor test and equity test इन्होंने किए. Equity मतलब कितना clearly आप किसी चीज को कर पाते हैं. Equity का मतलब ये होता है. And founded psychological review. और उन्होंने क्या किया? Psychological review. I think psychological review is a journal जो उन्होंने found, जिसके वो founder थे. And then Alfred Binet, we use Binet test. So that is in Indian जो adaptation है, that is Binet Kamath या Binet Kulshrestha. So that also name we also know. So the Galting approach was like inferring the nature of genius from the nature of stupidity of the qualities of water from those hydrogen and oxygen. So इनका ये था कि भाई कैसे, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हम समझते हैं यूनिट्स में कि हाइड्रोजन और वाटर बनता है तो H2O है, तो दैट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 molecules of hydrogen and 1 molecule of oxygen. So in that he thought that like we can study other things also in the psychological aspect also in the similar manner. So Alfred Binet introduced the first modern intelligence test which directly tested higher psychological process, real abilities and practical judgments. And कैसे टेस्ट जो आज की डेट में भी हम यूज करते हैं, लाइक पिक्चर नेमिंग, राइम प्रोडक्शंस, वेट ऑर्डरिंग, क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड डेफिनेशन एंड आल्सो मोटिवेटेड IQ, mental age divided by chronological age, है ना. Also I think developed IQ, the mental age divided by chronological age, जो रेशियो निकालते हैं MA/CA/100. So अल्फ्रेड बिनेट का ये कंट्रीब्यूशन रहा. और उनके जो टेस्ट बनाए हुए थे, जैसे इसमें लिखा हुआ है पिक्चर नेमिंग की, पिक्चर देख के नाम बताना है, राइमिंग करनी है या वेट को ऑर्डर में लगाना है, कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है. तो दे आर द मेंटल फंक्शंस, right? So these mental functions he started studying, and still we use those things in our modern test also. The rise of psychometrics, Lewis Terman produced a major revision of Binet-Comet. अच्छा, Binet scale. तो स्टैनफोर्ड बिनेट बोलते थे. तो स्टैनफोर्ड बिनेट का जो टेस्ट है, because Stanford was the university and Binet was like who developed the test there. तो बिनेट स्किल्स के बहुत सारे वर्जन आ चुके हैं आज की डेट में. तो शुरुआत तब से हुआ था, वो रिवाइज होके नाउ वी हैव न्यू वर्जन. रॉबर्ट यर्क्स convinced the US government that test 1.75 million army recruits post World War I. Factor analysis emerged, making other aptitude and personality tests. So उन्होंने कन्विंस कर लिया है रॉबर्ट यर्क्स ने 1990 में यूएस गवर्नमेंट को कि 1.75 मिलियन जो आर्मी रिक्रूट है, आर्मी पर्सनल्स हैं, उनका हम इंटेलिजेंस टेस्ट करते हैं. और व्हेन दे हैव डन द इंटेलिजेंस टेस्ट, तो उसकी फैक्टर एनालिसिस की, तो और भी बहुत सारे टेस्ट डेवलप हुए जिनको हम एप्टीट्यूड और पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं, बिकॉज दे आर टेकिंग डेटा एंड व्हेन दे एनालाइज दिस दोस थिंग्स, सो दे डेवलप अदर थिंग्स आल्सो, देयर अदर फैक्टर्स भी बाहर निकल कर आए. Why are psychometric tests used? Predict the job performance. क्या कर सकते, देखो psychometric test क्यों यूज करते हैं कि एक तो प्रिडिक्ट करने के लिए, साइकोलॉजी हम प्रिडिक्ट करने के लिए करते हैं कि सपोज you are assessing some individual who has depression, so you want to know how much depression that person is having, means you want to quantify it. Number 2, you want to predict what kind of behavior the person will show in future. Third thing is, if in clinical cases, how much improvement person is showing or not showing, both the things. So assessment के ये purposes होते हैं. तो predict job performance better than most other single selection methods. Tests give objective information about candidate, मतलब bias नहीं है आपके पास कोई. इसीलिए गवर्नमेंट्स क्या करती हैं, they take tests, not they just ask people to take interview and give jobs. It is not like that. You have to give written examinations in most of the jobs, so that we can minimize the biasness. Suppose interviewer को कोई जानता है तो उसको ज्यादा मार्क्स दे दिए उसने, तो क्या होगा, जिसको ज्यादा अच्छे से आता है
वो पीछे रह जाएगा. सो दैट इज व्हाई दे टेक तो क्यों टेस्ट करते हैं? टू रिड्यूस द बायस. इसलिए अच्छा तो टेस्ट गिव्स ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेट. मेजरिंग पोटेंशियल रेदर देन अटेनमेंट, फ्री फ्रॉम द कल्चरल बायसेस. सो बायसेस फ्री, कल्चरल बायसेस से भी फ्री होते हैं. एंड मेजरिंग पोटेंशियल रेदर देन अटेनमेंट. अंडरस्टैंड एनी टेस्ट. सपोज यू आर डूइंग like you have done IQ assessment on someone and you got the IQ of 120, right? So 120 is showing that person has ability. He is performing or not, we don't know, because there are other factors also. So it's so that is what it shows, the potential of the person, not the attainment, what he has achieved. कई बार बहुत ज्यादा IQ वाले लोग कुछ नहीं कर पाते लाइफ में. So that is what they tell. So they tell the capability, usually capability, not the attainment, how much they have achieved in life. अब क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट ये समझना भी जरूरी है, फिर हम आते हैं सारी चीजों पे आएंगे. कितने टाइप के टेस्ट होते हैं? Types of test, anyone? Any idea? I guess two types, qualitative and quantitative. There are different ways to categorize them. One that you told me, Anna, qualitative and quantitative. There are other based on different criteria. There are different classification you can say. I'm just telling you for your information. Like principal types of psychological tests on the basis of the criterion of administrative condition की किस तरीके से हम administer कर रहे हैं, उसके बेस पे हम डिवाइड कर सकते हैं. दूसरा स्कोरिंग हम कैसे कर रहे हैं, उसके बेस पे टेस्ट का क्लासिफिकेशन आप कर सकते हैं. दूसरा तरीका कि ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरियन ऑफ टाइम लिमिट, कितने टाइम में आप करते हैं या विदाउट टाइम का है, उसके बेस पे डिसाइड हो सकता है. ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरियन ऑफ नेचर ऑफ द कंटेंट आइटम, किस तरह का कंटेंट का आइटम्स है, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, उसके बेस पे आप उसको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. मैं एक एक करके बताऊंगा आपको उन सारी चीजों के बारे में. ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरियन एंड पर्पस ऑफ ऑब्जेक्टिव, कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है टू द टेस्ट. तो इंडिविजुअल टेस्ट एंड ग्रुप टेस्ट डिपेंडिंग ऑन हाउ the administrative conditions are. So there are some tests you can do them on groups, and there are tests that can be done only in individual, to individual only. Any example? कोई पता है आपको? No. So example is like TET and ROSAC you can do only in only with individuals. ठीक है. अब एप्टीट्यूड टेस्ट यू कैन डू इन ग्रुप, इंटरेस्ट टेस्ट यू कैन डू इन ग्रुप. सो ऑन दैट बेसिस आल्सो वी कैन डिवाइड टेस्ट टाइप ऑफ टेस्ट. So on the basis of administrative conditions, then on the basis of criterion, objective test and the projective test. ऑब्जेक्टिव टेस्ट कौन से हैं? जो पेपर पेंसिल टेस्ट है, जहां स्कोरिंग करते हैं, स्कोर्स निकालते हैं, दैट इज ऑब्जेक्टिव टेस्ट. प्रोजेक्टिव टेस्ट क्या है? जैसे टीईटी एंड रोसाक, दे आर सब्जेक्टिव टेस्ट. कल मैंने बताया भी था क्यों हम बोलते हैं सब्जेक्टिविटी होती है, हो सकती है उसमें नो स्पेसिफिक क्राइटेरिया कि क्या स्कोर आएगा, कितना आएगा, सब किसके बेस पे आप बोलेंगे. सो ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव प्रोजेक्टिव टेस्ट भी आप बोल सकते हैं, जो बेस्ड होता है स्कोरिंग मेथड के ऊपर. देन अगला आता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम लिमिट. एक तो होता है पावर टेस्ट, एक होता है स्पीड टेस्ट. पावर टेस्ट क्या होते हैं? लिखा हुआ है सामने, कोई एग्जांपल आप बता सकते हो आप? इंटेलिजेंस टेस्ट जैसे बेसिक. इंटेलिजेंस टेस्ट हो सकते हैं लेकिन सारे नहीं होते. मतलब जिसमें टाइम लिमिट होती है वो स्पीड टेस्ट, जिसमें टाइम लिमिट नहीं है वो पावर टेस्ट.
सर बिकॉज वो है जैसे सपोज, बैचलर की इंडेक्स। हाँ, टाइम लिमिट नहीं है उसमें, सॉरी उसमें एसपीएम आरपीएम करते हो, व्हेन यू डू एसपीएम एंड आरपीएम देयर इज नो टाइम लिमिट, बस देयर इज, ठीक है, एक टाइम लगता है इसके अंदर, लेकिन टाइम लिमिट, बट व्हेन यू आर डूइंग सम ब्लॉक डिजाइन एंड ऑल, सो दैट इज टाइम लिमिटेड टेस्ट, उसी टाइम के अंदर करना है। तो जो टाइम के अंदर करना है, दे आर चेकिंग योर स्पीड, so you can say power test and the speed test. Power test, that gives you lot of time, you can take your own time and you do the like test, so that is power test. And speed test जहाँ पे time limit दी हुई है। then on the basis of criteria, nature of the content, किस तरह का कंटेंट आप दे रहे हैं, जैसे वर्बल टेस्ट, यू नो दैट क्वेश्चनिंग राइटिंग है ना, ओरल पे आप कुछ पूछ रहे हैं, जैसे मिसिक में अगर आपने किया है, नहीं किया है तो आप करेंगे, सो दैट इज वर्बल टेस्ट। नॉन वर्बल टेस्ट, जहाँ पे आप कुछ मैनिपुलेट कर रहे हैं, कुछ ऑब्जेक्ट है, ब्लॉक डिजाइन, पिक्चर कॉम्प्लीट, पिक्चर अरेंजमेंट, ये सारे आपके नॉन वर्बल टेस्ट में आते हैं। समझ में आ रहा है ये टेस्ट के बारे में, आप अवेयर है नहीं है? आप लोग कम से कम इन टेस्ट के बारे में अवेयर हैं, थोड़ा बहुत, नहीं है जो मैं नाम ले रहा हूँ? ये सर वी आर अवेयर। अवेयर है सर, अवेयर। ठीक है, हाँ। सो तो नॉन वर्बल टेस्ट हो गया। देन परफॉर्मेंस टेस्ट, जहां पे आप परफॉर्म करते हैं किसी चीज को लेके, किसी आइटम पे, तो रिक्वायर्स एग्जामिनर परफॉर्म ए टास्क रेदर देन आस्क सम क्वेश्चंस। तो परफॉर्मेंस टेस्ट वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है, ये कंफ्यूजन मत रखना, ठीक है। तो अब परफॉर्मेंस टेस्ट में क्या आ जाते हैं, जैसे भाई ब्लॉक डिजाइन जैसे मैंने बताया था, वो परफॉर्मेंस में आपका आ जाता है, नॉन वर्बल परफॉर्मेंस टेस्ट है। नॉन लैंग्वेज टेस्ट, जहां पे लैंग्वेज यूज नहीं होती, जैसे आपका एसपीएम एंड आरपीएम है, देयर इज नो requirement of language, just only the requirement is you have to explain the like instruction to the client, otherwise there is no language is required there. So that is, so they don't depend upon any form of written, spoken or written reading communication, not for even instructions. तो जहाँ पे instructions की भी जरूरत नहीं पड़े, सिर्फ टास्क यूजली पड़ती है, टास्क आपको दिया जाता है, तो वहां पे आप उस टास्क को परफॉर्म करते हैं। तो ऑन दैट बेसिस कि नेचर ऑफ कंटेंट कैसा है, उसके बेस पे आप टेस्ट को डिवाइड करते हैं डिफरेंट उसमें। देन आज ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव, कि क्या पर्पस है, इंटेलिजेंस असेस करना है तो इंटेलिजेंस टेस्ट यूज करोगे। इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर देयर आर नंबर ऑफ अदर टेस्ट and there are aptitude tests, so there may be number of aptitude tests, achievement test, personality test. So based on the objective you can divide the types of test, right? So it is for our own purpose actually, so that we can understand, we can categorize things, and we can understand what kind of test we are like, we have what kind of test we will need. So there are different ways. So अगेन नेचर पे ये पर्सनालिटी, न्यूरोसाइकोलॉजिकल, जो न्यूरोलॉजिकल फंक्शन को असेस करते हैं, दे आर न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट टूल्स लाइक यू कैन से ल्यूरिया नम्ब्रास्का, एम्स बैटरी, निमहांस न्यूरोसाइकोलॉजिकल बैटरी. तो these are few names of neuropsychological battery. So usually at MA level, most of the they are not aware about these things. ठीक है, इतना समझ में आया? इज इट क्लियर विद यू ऑल? यस। ओके, सो अगर इतना क्लियर है, देन वी आर गोइंग फॉरवर्ड विद अदर थिंग, दैट इज आइटम राइटिंग. व्हाट इज आइटम राइटिंग? एनीवन? पुनीत, गौरव, श्रीजित, अमित, एम गांगुली, एनीवन? शोभा, what is item writing? सर जो भी टेस्ट बनते हैं ना हमारे, तो उनका जो बेस होता है वो कोई ना कोई आइटम, जैसे कोई भी जो डोमेन होते हैं उसी पे बेस्ड हमें मेनली क्वेश्चन को करने होते हैं सर। तो जो आइटम, जैसे फॉर एग्जांपल मलिन्स है, तो वो भी किसी ने आइटम, मतलब जो उसके डोमेन है। हेलो, सुन रहा हूं मैं. हेलो, am I audible? यस सर। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। जी सर।
आई थिंक शोभा कोई नहीं आ रही तो उसकी साइड में प्रॉब्लम होगा. So yes, item writing when you सर मैं are ड्राइव कर रही हूँ सर, मैं सॉरी सर. okay, no issues. So maybe like item writing is, suppose you are creating a personality test या IQ test. So आप उसमें कुछ लिखोगे तो कोई क्वेश्चंस तो आएंगे. तो एक पर्टिकुलर जो आपको क्वेश्चन होता शिकायत है मेरे या पापा ने आज ना बहुत अच्छे से मेरे बहुत आगे अच्छे से करते हैं. ठीक है, पुनीत आप अच्छे से वर्क करोगे ना घर पे, सबकी बात मान रहे हो? पुनीत जी अपना माइक स्विच ऑफ कर दें. नो सर सॉरी. So item writing is when you are creating a test, you have to write a item. Because if there are 100 questions, तो वो कभी तो बनाए होंगे किसी ने. So that is what writing those items is called as item writing. It is not a very simple process. It has a lot of things that you have to follow. So what are items? For test to be sound, the item must be good. Because जो आप suppose you are assessing the intelligence or aptitude, so the question must be regarding the same topic. If it is not, then you will not be able to get the right answers. So Bean defines item as a single task or questions that usually cannot be broken down into any smaller units. So item is a single thing or task like blog design in MISIC, and question like any one question in any personality questionnaire, that is item. So we call this as item. So an arithmetical or manipulative task, a mechanical puzzle, likewise sleeplessness may also be an item of the test, like BDI, other things that you have seen. So suppose you are someone like in test, it is asked that you sleep well in night or not. So that is an item. So who has written that? So writing those item is called as item writing. And after that, item analysis will come. So non-daily 1959 referred to the item as the lowest common denominator of the test, which is scored. जो score हम करते हैं. So now we are talking about characteristics of the good item. There should be no ambiguity while phrasing items regarding its meaning. It must be very clear. What you want to ask, that should be very clear. It is not like you are asking something and you are getting something. Sometimes it happens. If you are not asking a right questions, you will not get a right answer. And that also will decide the validity of your test. So the item should not be too easy or too difficult. Second thing, it should have discriminating power, that it must clearly distinguish between those who possess a trait, those who do not. Means ambiguity means, suppose you are asking something and there is ambiguity. Ambiguity means you are asking something and person is understanding something else. So it is not like this. You have to be very clear about like ambiguity. There should be no ambiguity when you are writing the item. And it should measure the significant aspect of the knowledge or understanding. So it should measure the like a specific aspect of the knowledge and understanding. So that is another quality. It should not encourage guesswork by the subject. It मतलब ऐसा ना हो कि guesswork करने वाले items कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है. Just like when you do MCQs, you feel that there are like 2-3 answers, they may be right. So it is not like that. It is not your exam, or psychological test is not an exam actually. So there should be very clear cut question. Guesswork का रास्ता नहीं होना चाहिए. Like what is the distance between Mumbai and Delhi? And you have like suppose given a MCQs कि 900 to 800, 850. So क्या हुआ? They are ambiguous. Like you may be confused because even if you know
So that should be avoided. It should not present any difficulty in reading. So suppose you have written items in English or Hindi, it should be very clear to them. And जो language है, that must be taken care of. And it should not be such that its meaning is dependent on another item, or it can be answered by referring to another item. Suppose you have written 10 items, so they must be independent. It is not like if you had done question number 1, then only you can do question number 2, or question number 1 or question number 5 is related. So it should not be like that. They must be independent. There should not be any connection between two items. So that creates clarity. And then types of items क्या हो सकते हैं, इसका डिटेल्स में बहुत नहीं जा रहा हूं मैं. So essay items or free answer items. Because there are questions and you can write anything. कौन सा टेस्ट होता है? जैसे आपका TAT, you have given the TAT cards, and even ROSA maybe. So they can write whatever they want. It is not like choosing something or something, not what they can write, what they are feeling, what they are thinking, what they are thinking about future and past. So all those things they have to write. You have given the instructions, they can write anything. So they are essay type. Objective type items or new type of items is ऑब्जेक्टिव टाइप्स का मतलब आपको पता है, जैसे एमसीक्यूज के होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स हो गए. देन शॉर्ट आंसर टाइप्स आपको पता है कि कैसे होते हैं, कि जैसे आपके एग्जाम्स में आते हैं. तो यूजुअली इस तरह के कम होते हैं क्योंकि ये क्वालिटेटिव डेटा के होता है. यूजुअली जो हम साइकोमेट्रिक असेसमेंट में प्रैक्टिस में चीजों में यूज करते हैं, कुछ एक टेस्ट को छोड़कर मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज ऑब्जेक्टिव टेस्ट. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की बहुत लंबा लंबा लिख रहे हैं, आपने बोल दिया, दैट कैन बी यूज्ड इन like psychoanalysis and all, वहां पे हम यूज कर सकते हैं, but they are not standardized one mostly. अब ऐसे आइटम्स के प्रॉब्लम क्या होंगे कि आप उसको कैसे स्कोर करोगे, अनरिलायबल होंगे, सब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी इनके साथ में. How to write essay items? I am not, because that I am telling you these things because that is required. सिलेबस में थोड़ा सा मतलब दिया हुआ है सिर्फ टेस्ट कंस्ट्रक्शन, दैट कम्स अंडर टेस्ट कंस्ट्रक्शन, बट इन योर सिलेबस जस्ट लाइक test construction, item analysis. So we will come to the item analysis, but these things are also important. So how to write essay items? In order to write good essay item, the following suggestion: any essay items must contain explicitly defined problem. देखो सीधे सी बात है, सारे के सारे में clearly defined questions होने चाहिए. It should be very clear what you are asking, है ना? And there must be बिल्कुल clear cut instructions to the person. इसीलिए क्या होता है, जो भी टेस्ट आप करते हैं, there are manual and there are specific instruction to that, because otherwise you are giving some instruction, I am giving some other instructions, and result will vary. So to avoid those things, we should be very specific. और ऐसे आइटम्स है तो टाइम आपको प्रॉपर देना पड़ेगा. अब इसको यूज कैसे करते हैं, स्कोर कैसे करेंगे? स्कोर करना डेफिनेटली थोड़ा सा सब्जेक्टिव हो सकता है. इन स्कोरिंग द रिस्पॉन्स ऑफ ऐसे आइटम, द एम्फेसिस शुड नॉट बी placed on the factual information, rather than a great emphasis should be given on to the presentation of thoughts. अब जैसे TAT है, in TAT if you have done or you are reading, because I think that is in your syllabus, so in psychological testing, so you will read those things. So in TAT what we do is we analyze the theme. Because whatever you will write whatever comes in your mind. You cannot write those things that you don't know. You cannot write any story that you have not imagined. So that is somehow that is related to your thought process. So we try to interpret, evaluate those thoughts, emotions, and behavior. When you will learn TAT, or you have already learned, I don't know, but then you will see how we score, how we see organization, theme, outcome, all those things we see in TAT. So that is kind of assessment we do.
do. So there are two general methods of scoring the response of essay items, the scoring methods and the point score methods. Is the scoring method and the point score method. तो point is क्या होता है कि अब आप देखेंगे रोसाक एंड टीटी वहां पे भी स्कोरिंग होती है कुछ कि अगर पूरा रिस्पांस देखा है रोसाक में तो we give it W whole response and then D like small thing he has taken, but that is not actual numerical one. We calculate some percentage and all in both the tests, but that is not a quantitative thing. That is very subjective. So sorting method and the point score method. अब sorting method क्या है? The sorting method, the answer sheet of the examiners first sorted in different groups. कि किसने पॉजिटिव स्टोरी बनाई है, किसने नेगेटिव आउटकम दिखाया है, तो उसके बेस पे आप अलग अलग कर सकते हैं. But in clinical cases, you are dealing with only one case. But when it comes to test construction, you have to take a lot of people in that. ठीक है? तो इस sorting method हो गया. Then point score methods. Point score method एक grading की consisting of correct answer and the point to be assigned to prepare D beforehand by the scorer. And the score has only to compare the answers of the examinees. Like if you have done, you know about Rosak in blood test. So वहाँ पे हम ये देखते हैं कि कितने लोगों ने पूरे कार्ड पे रिस्पांस दिया है, how many people have given on like small responses on a small portion of the block. So in that way we can score how much percentage like people are getting on whole responses or detailed responses or how much human responses they have given. So that, and then we compare that data for the analysis. So that is point score method. Objective items हमें पता है क्या होते हैं. उनको दो कैटेगरीज में हम बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं. सप्लाई टाइप of item in one where the examinee is to write down the correct answers on his own. Like you ask who has established the first psychological lab in India. अब आपको इसका आंसर देना है. So that is a examinee type, supply type. And selection type of the item, one where the examiner is to select the identify the correct answer, जैसे MCQs होते हैं. तो दो तरह के ऑब्जेक्टिव आइटम्स हो सकते हैं. ठीक है, जैसे फर्स्ट वाले में आपका फिल इन द ब्लैंक्स भी आएगा. तो सप्लाई टाइप आइटम्स बता दिया मैंने, तो डिटेल में इसके हम नहीं जा रहे हैं, है ना. हाउ टू राइट कंप्लीशन आइटम सो आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं. Ambiguous form behaviorism was founded in the above item. Two possible answers, 1913 and America, both of which are correct. तो क्या लिखा हुआ? Behaviorism was founded in America या फिर किस ईयर में. दो आंसर हो सकते हैं, तो ambiguity अवॉइड करनी है. So what we will write? कि behaviorism was founded in the year. तो अब पता चल गया पर्सन को किस ईयर में हुआ था, कि ईयर लिखना है हमें. या फाउंडेड बाय लिखा होता तो फाउंडेड इन कंट्री तो आप अमेरिका लिख देते. वी आर फाउंडेड इन द कंट्री नोन एज, वो हो जाता. तो ये क्लियर और एम्बिगुइटी में फर्क होता है. कैसे हम जब टेस्ट डेवलप करेंगे तो आइटम्स कैसे लिखने हैं वो चीज यहाँ पे दिया है. देन कहीं पर भी आपको एक क्लू नहीं देंगे. अगर क्लू देते हैं यानी हिंट देते हैं तो दैट इज नॉट ए राइट आंसर, बिकॉज देन यू आर डायरेक्टिंग द क्लाइंट or person. So that should be right. The clue which give a direct hint to the correct answer must be avoided. Example क्या है? A person who believes in God is known as, and a person who does not believe in God is known as. So अब theist और atheist लिखा जाएगा. So you are guiding the पहले का अगर आपको पता है तो दूसरे का भी पता होगा. सिंपल सी बात. तो ये आइटम्स अवॉइड करने. मेरिट एंड डिमेरिट
they require the examiners to recall their past association rather than to merely recognize them. In completion items, the guessing of the correct answer is reduced to a minimum as there are no option or answers given. And then demerits organizational ability require complex understanding and applications of scientific and theoretical principle in which synthesis, analysis, and evaluation skills are required is not ordinarily measured by these items. Its scores may not be objective. Sometimes it happens that the correct answer is not acceptable to many experts. Thus, the scoring tend to be subjective. So, besides scoring, स्कोरिंग में गेट डिलेड फॉर कंसिडरेबल टाइम. तो अब क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्टिविटी नहीं होगी, है ना, तो क्या होगा, सब्जेक्टिविटी आ जाएगी. सब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है, मैं कुछ स्कोर कर रहा हूं, आप कुछ स्कोर कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स होंगी. आपको क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करने में दिक्कत होगा, राइट आंसर्स क्या हैं वो दिक्कत होगी. तो अब ये प्रॉब्लम्स कई बार अगर सब्जेक्टिविटी है, सब्जेक्टिव टेस्ट है, तो वहां पे ये प्रॉब्लम्स होती है ना. अब अगर नहीं है तो हम इजीली क्लियरली स्कोर कर सकते हैं आइटम्स को और समझ सकते हैं. देन आता है आपका सिलेक्शन टाइप, जहां पे डेफिनेटली आपका अल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं, एमसीक्यूज की जो हम बात कर रहे थे उस तरह के क्वेश्चंस होते हैं. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो सकते हैं, मैचिंग हो सकता है. हम लोग बचपन में करते आए, देखा है हमने कि हमें लाइन खींच के मिलाना होता है कि ए और बी कनेक्टेड है, बी एंड सी एंड डी कनेक्टेड है. तो दैट काइंड ऑफ थिंग इज लाइक सिलेक्शन टाइप क्वेश्चंस. टू अल्टरनेटिव आइटम्स, जहाँ पे दो आइटम्स दिए हैं, जैसे यस और नो. बहुत सारे टेस्ट होते हैं इस तरह के जहाँ पे ओनली देयर आर टू आइटम्स और समटाइम देयर आर थ्री आइटम्स, यस समटाइम्स नो, that kind of thing. So that is two alternative items. थ्री items के type मैं आपको बता रहा हूँ. And then आपका आता है demerits of alternative forms, कि भाई आपके पास specific information ही आ रही है, जितना पूछा गया आप उतना बता रहे हो, इंडिविजुअल डिफरेंसेस नहीं आते, नहीं मिलते हैं. क्योंकि सपोज देयर आर ए क्वेश्चन वेयर देयर इज ओनली 20 questions and उन्हीं के आंसर्स देने हैं only in yes or no or yes sometime and no, just like 16 PF and other tests. So what will happen, individuality नहीं आएगी. सारे के सारे लोग डिफरेंट हो सकते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं, but we are assessing them on only that test that divides the personality into 2, 3, 5 types or whatever you say. So that is a demerit of any test, personality test, right? So the other information like how the person is thinking, how they are behaving, and what other characteristics they have, we are not focusing on that. And other thing is, if they don't know the answer or they are not, something is not appropriate to them, they use guesswork also. So there are 50% chances they may be right, they may be wrong. How to write items of the alternate form? There are some general suggestions, guidelines that must be kept in mind at the time of writing two alternative items, because the statement must be simple and straightforward, not complex and direct. Poor form, the experimental study of human behavior in the laboratory started about 100 years ago. Improved क्या हो गया? The first experimental study of human behavior in the laboratory started in 1979. Right? So exact information लिखिए कि 1879 में हुआ, एक में लिखा हुआ है 100 years ago. So after some time, after 10 years, that may become 110 years. So we should not write questions in that format, because after a year, 10 years, that will be invalid thing. आज है 100 year पहले हो सकता, and then in after 10 years it will be 110 years. So that we have to understand. And then other poor form is the capital of India is Delhi. True or false? Improved form क्या है? The capital of India is New Delhi. True or false? So exact word.
कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली, ठीक है. So that is what we should know. Double negative must be avoided because they tend to confuse the examinees. Double negatives क्या होते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल से. A driver can have no accurate idea of the speed of the vehicle is there is no speedometer in it. True or false? दो जगह नेगेटिव वर्ड्स यूज हुए, नो एंड. सो इम्प्रूव. In the absence of a speedometer, the driver is unable to get an accurate idea of the speed of the vehicle. So that is an improved version. So these are a few examples how we write items. Bilkul clear cut. Sometimes if you want to take the help when you develop the test, you can take the help of some linguistic person. ठीक है. तो पुअर फॉर्म क्या है, नेक्स्ट देखते हैं. इंटेलिजेंस रिफर्स टू द एक्सटेंट टू विच पर्सन इज एबल टू लर्न और प्रॉफिट बाय पास्ट एक्सपीरियंसेस. इंप्रूव्ड फॉर्म क्या है, अकॉर्डिंग टू इबन हॉस इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू लर्न और टू प्रॉफिट बाय द पास्ट एक्सपीरियंसेस. तो समझ में आ रहा है ये बात कि कहां पे प्रॉब्लम्स आती हैं, किस तरह की चीजें होती हैं. एवरीवन, are you able to understand what I'm telling you? Because this may be first time you are reading all these things. Till now you were only and only doing the psychological test. ठीक है. So I understand one thing. When you are dealing with your client, counseling कर रहे हैं, interview कर रहे हैं, therapy कर रहे हैं, at that point of time also you should be very clear with your questioning skills, what you are asking. So improve yourself on that front also. अगर आप right questions करेंगे, then only you will get the right answers from. These are things that is for like developing test, psychological test. But when you are dealing with your client, then also you have to be very careful about selecting the words and asking the questions. Like many times people ask when they come, client comes to you and you ask what problem you have. आपको क्या problem है? This is not the right way, because you are labeling that person has problem. Instead of asking this, you can ask, okay, tell me what is your concern. या कैसे आना हुआ अगर हिंदी में हम पूछ रहे हैं. So that kind of thing you can ask, and directly when you are saying what problem you have, so that is a very negative sentence. So we have to be very careful when you are choosing your questions, even while you are interviewing therapy. So specific determiners which are likely to help the examiners in finding out the correct answer must be avoided. कि किसी भी तरह का अगर कोई हिंट मिल रहा है आपके क्वेश्चन से, सो वो अवॉइड करना है हमें. देयर मस्ट बी फिक्स सीक्वेंस, एक फिक्स सीक्वेंस होनी चाहिए. सपोज आप क्वेश्चनर बना रहे हैं, सो एंड देन देयर आर क्वेश्चंस लाइक यस, समटाइम्स नो. तो एवरीवेयर इट शुड बी लाइक दैट, यस समटाइम्स नो. ऐसा ना हो कि कहीं पे ऐसा हो नो समटाइम यस, उल्टा हो जाए. नो, यू हैव टू फॉलो specific sequence. If a statement has been taken from some book or some other, so it should be paraphrased. अगर कहीं से लिया गया तो उसको पैराफ्रेज यानी अदर वर्ड्स में करके आप यूज कर सकते हैं. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बता दिया मैंने आपको क्या होते हैं, एंड यू नो आल्सो, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट. एमसीक्यूज में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी सिमिलरली बिल्कुल एग्जैक्टली क्लियरली विदाउट एम्बिग्युइटी you should write the items, right? Matching items पता है आपको कैसा होता है. You know that these things because I think till now you have attended a lot of competitive exams also. How to write the matching items? Number of alternative answers must be gathered greater than the number of stems, and this is done in order to reduce the probability of correcting pair. And though the process of elimination, the item must contain clear instructions or directions that तो सभी में होना है. And the set of stems, the set of response stems मतलब जो पहले दिए होते हैं, responses मतलब जो दूसरे
आंसर्स दिए हैं। रिस्पॉन्सेज ऑप्शंस मस्ट बी वर्डेड इन ए सिमिलर फैशन, एक ही तरीके से आपको बनाने हैं, है ना, मिलते जुलते। आप देखोगे ना कंफ्यूजन क्रिएट होता है जैसे, तो एक ही उससे होना चाहिए, बिल्कुल ही अलग अलग होंगे देन यू विल गेस इजीली, सो इट शुड नॉट बी लाइक दैट। सो दैट काइंड ऑफ like in that way you can create these questions. Limitation of matching, because again there is a limited information, है ना, so so अब ये बेस्ड होते हैं फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के ऊपर, तो डिटेल्ड आपको नहीं पता लगती है। अब नाउ the process is you have to eliminate the wrong answers and choose the right answers or connect the right answers. So sometimes you know all these things, तो वो process नहीं होता है directly, they can, because they know, they easily do that. So अब ये भी देखना होता है this kind of questions कहाँ पे ज्यादा suitable होंगे, किस attribute को assess करने के लिए, है ना। Lastly, the examine takes longer to answer matching items as compared to the two alternative items and multiple choice. इसमें टाइम ज्यादा लगता है, तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ता है in comparison to you can say multiple choice questions. And other type of format are the Likert scale, the category format, and the checklist and Q sorts. तो Likert format क्या होता है, जो आप देखते हैं agree, strongly agree, strongly agree, disagree, strongly disagree, इस तरह से जहां दिया होता है, या 0 1 2 3 4 में डिवाइडेड होता है, वो सारा क्या होता है, लिकर्ड स्केल्स होते हैं, वो लिकर्ड स्केल्स बोलते हैं उस तरह के टेस्ट जो यूज होते हैं, है ना। तो अब उसमें आपको चूज करना होता, तो वी कॉल देम लिकर्ड स्केल, ये ध्यान रखना आप। कैटेगरी स्केल्स क्या होता है, it is similar to the Likert scales, but here are the number of choices or options are greater than those of Likert. The most popular category format is 10-point scales. इस 0 to 10 में आपको बताना है you like it or you don't like it. 10 का मतलब you like it very much, and 0 का मतलब you don't like it. So in that, these are the category scales, है ना। So and visual analog scale भी हम लोग यूज करते हैं, जैसे आप कभी स्टोर्स पे जाते हैं और समवेयर लाइक जाते हैं, तो वहां पे स्माइलीज बने हैं, सो लाइक 10 स्माइलीज बने हुए हैं, सो उनमें से आपको एक को चूज करना है। यानी देयर आर 2 पॉइंट्स, वन इज you can say strongly agree or disagree or whatever dimension it is, another is opposite to that. And checklist and Q sorts. So is in an adjective checklist, if the respondent receives a long list of adjectives and he has to indicate whether or not each adjective is true to his or her case, है ना, कि एक आपको लिस्ट मिली हुई है, एग्जांपल दिया है इसमें नहीं, हाँ, सो लिस्ट मिली हुई है, जैसे उसमें लिखा हुआ है आई एम स्मार्ट, आई हैव लाइक वेल कम्युनिकेशन, आई एम गुड इन कम्युनिकेशन, एंड इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हैं, उस पे आपको चेकलिस्ट है, उस पे आपको अपने बारे में बताना है कि ये आपके लिए ठीक है या नहीं है, तो दैट इज चेकलिस्ट आप बोल सकते हैं। सच ए चेकलिस्ट इज आइदर यूज्ड इन डिस्क्राइब वनसेल्फ और अदर, या अपने को या दूसरे को, जैसे हम कभी जज करते हैं इफ एनीथिंग और एनी पर्सन, सपोज देयर इज ए म्यूजिक कंपटीशन एंड द जजेस आर जजिंग देम, तो देयर आर क्राइटेरियाज लाइक दे हैव गुड वॉइस, they have good surtal, or they have appropriately dressed or not, so they just tick it, so that is a checklist that we use. So Q sort is another similar technique which is used to describe oneself to provide rating of others. In this technique, respondents are given a set of statement with the instruction to set them into a 9 piles. एक क्या कहते हैं, instructions दिए हुए हैं, उनको sets में लगाना है। On basic characteristics, we saw that frequency of the item place in which each category generally and usually looks like a bell-shaped curves. So लोगों को ऊपर दिए जाते हैं, लोगों को दिए जाते हैं, and they categorize those things, तो उसको हम Q-sort बोलते हैं। Difference between essay type and test and objective types already हमने बता दिया है आपको, so we are not going into that. क्या it is because obviously clear कि MCQs क्या हैं और essay types क्या हैं, objective types क्या बोलते हैं। And then now
जनरल लाइक गाइडलाइंस क्या होती हैं, पहले ही मैं बता सकूं, एक तो क्लियरिटी होनी चाहिए, ऐसे वर्ड्स होने, नॉन फंक्शनल वर्ड जिनका मतलब नहीं पता है या जो यूजुअली यूज नहीं होते वो नहीं यूज करने हैं, है ना। इनरिलेवेंट क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, इनरिलेवेंट यूज नहीं होने चाहिए जिससे वो गेस वर्क कर सके, है ना। एक जैसे आइटम मिलते जुलते नहीं होने चाहिए कि एक ही चीज को आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, है ना। एंड आप आपको सोशियोमेट्रिक्स टेक्निक, अच्छा ठीक है, तो ये उसी के अंदर आता है, तो मिलते जुलते क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। एंड ये जो कुछ चीजें हैं ये आपको ध्यान रखना होता है, जो आप ये एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं कुछ इंटरलॉकिंग के, सो वो क्लियरिटी, नो एम्बिग्यूटी, क्लियर इंस्ट्रक्शंस, ये सारी चीजें हमारे क्या कहते हैं क्वेश्चन में होना चाहिए, कोई स्टीरियोटाइप क्वेश्चन वर्ड नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी होती हैं जब हम टेस्ट के आइटम्स डेवलप कर रहे हैं। एंड द फॉलोइंग फैक्टर मस्ट बी केप्ट इन व्यू व्हाइल सिलेक्टिंग ए मेथड ऑफ स्कोरिंग। कैसे स्कोर करेंगे, इट मस्ट नॉट टेक मच टाइम। पता चला टेस्ट ऐसा डेवलप आपने किया जिसको स्कोर करने में ही 2 दिन लगते हैं, तो इट इज नॉट यूजफुल फॉर यू, बिकॉज क्लाइंट आपके पास आया प्रॉब्लम में है या आपको कहीं रिजल्ट देना है उसका, एंड यू आर टेकिंग 2 वीक्स, अगर 100 लोग हैं तो 2 वीक्स 3 वीक्स टू स्कोर द टेस्ट, सो दैट शुड नॉट बी, कम से कम टाइम में हो जाए। इट मस्ट नॉट बी सच दैट ओनली हाईली ट्रेन्ड पर्सन, ऐसा नहीं हो कि केवल जिनकी लैंग्वेज बहुत ही अच्छी है, ऐसी लैंग्वेज में आपने लिखा है जिनका बहुत अच्छा हिंदी या इंग्लिश पे कमांड है, दैट ओनली दे पीपल only can do this kind of test. So no, that should not be there. We are creating the test for general population, so we have to take care of the language also. It must ensure objectivity होनी चाहिए. Method of scoring should produce maximum accuracy, and ऐसा टेस्ट ऐसे स्कोरिंग हमें करनी है, स्कोरिंग सिस्टम डेवलप करना है, सो दैट एवरीवन इजीली कैन डू इट। अदरवाइज क्या होगा, अगर सब्जेक्टिविटी आएगी, इजीली नहीं कर पाएंगे तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। देन ओवरले की मेथड, इसमें क्या होता है, जो आपका स्टेंसिल्स होते हैं, सो टू लाइक टू इंक्रीज द स्पीड you can create stencils. I think you know the stencils. There is the answer sheet, आंसर एक ट्रांसपेरेंट सीट होता है, उसके ऊपर राइट आंसर के मार्क्स लगे होते हैं, एंड यू पुट दैट stencils on the answer sheet and you can get the right answer. So that is overlay key method that you can use. Stripe key method, it is the method to correct answer to each item is printed vertically and stripe of the paper on a cardboard, कि वो ऑलरेडी लिखा हुआ है आपका साइड में, और जिससे आप देख सकते हैं कि क्या राइट है क्या रॉन्ग आंसर्स है ना। तो जैसे आपने देखा होगा वेपिस आप यूज करते हैं, उसमें है नंबर राइटिंग का या टेस्ट है जिसपे आप उसके ऊपर रख देते हैं और देख लेते हैं कि मैच करा लेते हैं कितने राइट आंसर्स की हैं कितने, तो स्ट्राइक की उनको हम बोलते हैं। सो दैट इज व्हाट अबाउट टेस्ट राइटिंग टेस्ट आइटम्स, राइट। What is psychological testing that we have covered today, and now in next class tomorrow we'll start with item analysis, how you analyze those items, right? Writing in one thing, analyzing is another, right? So any question? कोई क्वेश्चन है आपका?